नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानल मिसन फर बैंकरमा। नोबेल बैंक र सिटिजन बैंकमा सर्टलिस्ट हुने साथीहरुको लागि मैले सिलेबस कभर हुने गरी यो सेकेन्ड मोडल सेट मैले अपलोड गरेको छु। यो भन्दा अगाडि पनि मैले एउटा मोडल सेट अपलोड गरेको थिएँ दुईवटा पार्टमा। त्यसको दुईवटा भिडियोहरु छ। तपाईहरुलाई मैले डिस्क्रिप्सनमा त्यसको लिंक राखिदिन्छु। यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा गएर त्यो भिडियोको लिंकमा क्लिक गरेर तपाईहरु त्यो भिडियो सजिलै हेर्न सक्नुहुन्छ। सिटिजन बैंकमा सर्टेज भएको साथीहरुलाई म भिडियोको लास्टमा सब्जेक्टिभ क्वेशनहरु कुन आउन सक्छ भने म त्यो हजुरहरुले बताउँछु। भिडियो चाहिँ स्किप नगरिकन नोबेल बैंक र सिटिजन बैंकमा सर्टेज भएका साथीहरुले भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला र तपाईहरु मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। तपाईहरुले गरेको सब्स्क्राइबले मलाई अझ पनि प्रोत्साहन मिल्नेछ र म अरु पनि भिडियोहरु तपाईहरुको लागि अपलोड गर्ने छु। ल त अब हामी स्टार्ट गरौँ। सिलेबसको बारेमा हामी लास्ट भिडियोमा पनि कुरा गरिसकेका छौं। फेरि पनि हामी एक झलक सिलेबसलाई हेर्ने। हाम्रो चाहिँ सिलेबस यस प्रकार छ। जनरल म्यानेजमेन्ट कन्सेप्टबाट 10 वटा क्वेशन आउँछ 10 मार्क्सको लागि। टेक्निकल नलेजबाट 10 मार्क्सको लागि। भर्बल एबिलिटीबाट 10 मार्क्सको लागि। लजिकल रिजनिङबाट 10 मार्क्सको लागि। क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिसबाट 10 मार्क्सको लागि। अनि चाहिँ बैंकिङ एन्ड फाइनान्सबाट 20 वटा क्वेशन चाहिँ 40 मार्क्सको लागि र करेन्ट अफेयरबाट 10 वटा क्वेशन चाहिँ 10 मार्क्सको लागि। ल त अब हामी पहिलो चाहिँ टपिक हाम्रो जनरल म्यानेजमेन्ट कन्सेप्टबाट क्वेशनहरु हेर्ने। Which one of the following is not a disadvantage of planning? Option छ तपाईहरुको टाइम कन्ज्युमिङ, रिजिडिटी, फल्स सेन्स अफ सिक्युरिटी, रिड्युस इम्प्लोइज मोरल। यसको चाहिँ राइट आन्सर अप्सन डी रिड्युस इम्प्लोइज मोरल हो। त्यसैगरी हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन छ Which is the second level need as per Maslow's need hierarchy theory? Option छ सेल्फ एक्चुअलाइजेसन नीड, बिलोंगिंगनेस नीड, साइकोलोजिकल नीड र डी सेफ्टी सिक्युरिटी नीड। यसको राइट आन्सर चाहिँ सेफ्टी सिक्युरिटी नीड हो। त्यसैगरी अर्को क्वेशन रिक्रुटमेन्ट क्यान बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। यसको चाहिँ अप्सन छ हाम्रो इन्भिटेसन अफ पोटेन्शियल इम्प्लोइज टु एन अर्गनाइजेसन। बी छ सेलेक्सन अफ पोटेन्शियल इम्प्लोइज टु एन अर्गनाइजेसन। अप्सन सी स्क्रन्टी अफ पोटेन्शियल इम्प्लोइज टु एन अर्गनाइजेसन। अप्सन डी छ अट्र्याक्सन अफ पोटेन्शियल इम्प्लोइज टु एन अर्गनाइजेसन। यसको चाहिँ राइट आन्सर अप्सन डी अट्र्याक्सन अफ पोटेन्शियल इम्प्लोइज टु एन अर्गनाइजेसन हो। त्यसैगरी नेक्स्ट क्वेशन छ विच अफ फेल्स प्रिन्सिपल स्टेट दैट वर्कर्स शुड बी इन्करेज टू डेभलप एन्ड क्यारी आउट प्लान्स फर इम्प्रुभमेन्ट। यसको चाहिँ अप्सन छ ए इनिसिएटिभ, बी युनिटी अफ डाइरेक्सन, सी डिसिप्लिन, डी कोअर्डिनेसन। यसको चाहिँ राइट आन्सर ए इनिसिएटिभ हो। त्यसैगरी नेक्स्ट क्वेशन छ हाम्रो The administration is a higher level activity while management is a lower level function. यो स्टेटमेन्ट ट्रू हो कि फल्स हो हामीले पत्ता लगाउनु छ रिड गरेर। अनि यसको अप्सन चाहिँ ट्रू र फल्समा राइट आन्सर चाहिँ ट्रू हो। त्यसैगरी हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन छ which of the following is correct definition of management? अप्सन छ तपाईहरुको management is an art or technique of getting things done. Option B management is a process of planning, organizing, staffing, directing and controlling. Option C छ management is set of activities directed and effective utilization of resources in the pursuit of one or more goals. Option D छ all of the above. यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन डी all of the above हो। त्यसैगरी हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन छ लुथर गुलिक coined the word dash to describe the function of management. अप्सन छ पड्सकर्प, अर्को चाहिँ POSCORD पस्कर्ड, अर्को अप्सन सी छ DOBSCORD र अप्सन डी नन अफ द एबभ। यसको चाहिँ राइट आन्सर पड्सकर्प हो। त्यसैगरी नेक्स्ट क्वेशन छ हाम्रो इफ अ जनरल म्यानेजर आस्क द सेल्स म्यानेजर टु रिक्रुट सम सेल्सम्यान अन हिज बिहाफ इट इज एन इन्स्टेन्स अफ अप्सन ए डिभिजन अफ अथोरिटी, अप्सन बी डेलिगेसन अफ अथोरिटी, अप्सन सी डेलिगेसन अफ रेस्पोन्सिबिलिटी अथवा अप्सन डी डिसेन्ट्रलाइजेसन अफ रेस्पोन्सिबिलिटी। यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन बी डेलिगेसन अफ अथोरिटी हो। त्यसैगरी नेक्स्ट क्वेशन छ टु म्यानेज इज टु फोरकास्ट एन्ड प्लान, टु अर्गनाइज, टु कम्पाउन्ड, टु कोअर्डिनेट एन्ड टु कन्ट्रोल। दिस डिफिनिसन वाज गिभन बाई अप्सन छ पिटर ड्रकर, अप्सन बी हेनरी फेयल, अप्सन सी लुइस एलन, अप्सन डी टेरी। यसको चाहिँ राइट आन्सर हेनरी फेयल हो। त्यसैगरी हाम्रो अर्को क्वेशन छ विच अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट इज करेक्ट? अप्सन छ ए कन्ट्रोलिङ इज अ सब्स्टिट्युट फर प्लानिङ,
Option B, controlling is a part of the planning process. Option C, a control process is meaningless without preset goals. Option D, planning and controlling are essentially one and the same. इसको राइट आंसर चाहिए ऑप्शन सी, a control process is meaningless without preset goals हो। त्यसै गरी हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ, मैन मनी मेटेरियल एन्ड मसिन्स आर इन्क्लुडेड इन। अप्सन चाहिँ तपाईँहरूको ए फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन, बी रिसोर्सेस, सी बजेट प्रिपरेसन अथवा डी कस्ट एनालाइसिस। यसको राइट आन्सर चाहिँ बी हो। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो, हु इज रिगार्डेड एज द फादर अफ साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट। अप्सन चाहिँ तपाईँहरूको ए हेनरी फ्युअल, बी पिटर ड्रकर, सी एफडब्ल्यू टेलर अथवा डी हेरोल्ड कुन्ज। यसको चाहिँ राइट आन्सर हो एफडब्ल्यू टेलर, सी। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो, according to the principle of span of control there is। option छ A, limit to delegation of authority to the subordinate, B, a tendency of overload supervisor with too much of work, C, no limit to the number of subordinate a supervisor can supervise, अथवा D, a limit to the number of subordinate a supervisor can effectively supervise। यसको राइट आन्सर चाहिँ ए हो। त्यसै गरी हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ, the process involved in recruiting, hiring, training, evaluating, compensating and laying off people is called। ऑप्सन तपाईँहरूको सिलेक्सन, ऑप्सन बी एस, ऑप्सन सी लीडर, ऑप्सन डी लाइसन। यसको चाहिँ राइट आन्सर ऑप्सन बी हो। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो, according to management 2.0 leader will be no longer be seen as, instead they will need to become। विच वान इज द करेक्ट ऑप्शन। यसको चाहिँ ऑप्शन छ ग्रान्ड विजनरीज कमा सोशल आर्किटेक्ट्स। त्यसै गरी अर्को ऑप्शन छ कन्स्टिट्युसन राइटर्स कमा अल वाइज डिसिजन मेकर्स। ऑप्शन सी एन्टरप्रेन्योर्स अफ मिनिङ आयरन फिस्टेड डिसिप्लिनरीज अथवा ऑप्शन डी अल अफ द एबव। यसको राइट आन्सर चाहिँ ऑप्शन डी हो, अल अफ द एबव। त्यसै गरी हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ, a person who encourage staff participation in decision making process is which type of leader। option A participative, option B situational, option C charismatic अथवा option D bureaucratic। इसको चाहिँ राइट ऑप्शन ए पार्टिसिपेटिभ हो। त्यसै गरी हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ, मैनेजर्स मेक रेशनल डिसिजन बट विदिन द लिमिट अफ देयर मेन्टल क्यापेबिलिटिज एन्ड इन्फर्मेसनल अवेलेबल टु देम, this theory is known as। ऑप्शन छ ए लिमिटेड रेशनैलिटी, ऑप्शन बी बाउंडेड रेशनैलिटी, ऑप्शन सी प्रैग्मेटिक रेशनैलिटी अथवा ऑप्शन डी नन अफ दिस। यसको चाहिँ राइट आन्सर बाउंडेड रेशनैलिटी हो। त्यसै गरी हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ, इन लाइन एन्ड स्टाफ अर्गनाइजेसन द अथोरिटी लाइज इन। ऑप्शन ए लाइन, ऑप्शन बी स्टाफ, ऑप्शन सी बोथ लाइन एन्ड स्टाफ अथवा ऑप्शन डी नन अफ द एबव। यसको राइट आन्सर चाहिँ ए लाइन हो। त्यसै गरी हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ, विच अफ द फलोइङ इज नट ट्रू इन रेस्पेक्ट अफ प्लानिङ। ऑप्शन छ तपाईँहरूको ए प्लानिङ इज फरवर्ड लुकिङ, बी प्लानिङ इज एन इन्टेलेक्चुअल एक्टिभिटी, सी प्लानिङ इज रिलेटेड टु अब्जेक्टिभ अथवा ऑप्शन डी प्लानिङ फङ्सन इज नट परफर्म बाई द टप म्यानेजमेन्ट। यसको चाहिँ राइट आन्सर ऑप्शन डी हो। त्यसै गरी हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ, the extent to which power and authority are retained at the top management is called as A centralization, B decentralization, ऑप्शन सी responsibility अथवा ऑप्शन डी accountability। इसको राइट आंसर ऑप्शन ए हो सेंट्रलाइजेशन। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन छ, which is the second level need as per Maslow's need hierarchy theory। ऑप्शन छ ए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ऑप्शन बी बिलोंगिंगनेस नीड, ऑप्शन सी साइकोलॉजिकल नीड्स अथवा ऑप्शन डी सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड। इसको राइट आंसर चाहिँ ऑप्शन डी सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड हो। त्यसै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन छ, विच अफ द फलोइङ वुड नट इम्प्रुभ द करेन्ट रेशियो। इसको ऑप्शन छ बोरो शॉर्ट टर्म टू फाइनेंस एडिशनल फिक्स एसेट, ऑप्शन बी इशू लॉन्ग टर्म डेट टू बाय इन्वेंटरी, ऑप्शन सी सेल कॉमन स्टॉक टू रिड्यूस करेंट लायबिलिटीज अथवा ऑप्शन डी सेल फिक्स्ड एसेट्स टू रिड्यूस अकाउंट्स पेबल। इसको राइट आंसर चाहिँ ऑप्शन ए हो। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन छ, among the pairs given below select an examples of a principal and of example of an agent respectively। ऑप्शन चाहिँ तपाईहरुको ए शेयर होल्डर मैनेजर, ऑप्शन बी मैनेजर ओनर, ऑप्शन सी अकाउंटेंट बॉन्ड होल्डर अथवा ऑप्शन डी
शेयर होल्डर और बॉन्ड होल्डर। इसको राइट आंसर चाहिँ अप्सन ए हो, शेयर होल्डर मैनेजर हो। त्यसै गरी हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ, विच अफ द फलोइङ वुड नट बी काउंटेड एज अ पार्ट अफ इन्क्रिमेंटल कैश फ्लो। यसको चाहिँ अप्सन छ अपर्च्युनिटी कस्ट, सङ्क कस्ट, अप्सन सी एक्सटर्नल कस्ट सच एज ब्रांड कैनिबलिज्म, अप्सन डी external benefits such as acquisition of new technology which can be applied to other parts। यसको चाहिँ राइट आन्सर बी हो, सङ्क कस्ट। त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ हाम्रो, इन फाइनान्स वी रेफर्स टु द मार्केट वेयर न्यू सिक्युरिटीज आर ब्रॉड एन्ड सोल्ड फर द फर्स्ट टाइम। अप्सन छ ए मनी मार्केट, बी क्यापिटल मार्केट, सी प्राइमरी मार्केट अथवा डी सेकेन्डरी मार्केट। यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन सी प्राइमरी मार्केट हो। त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेसन छ, इफ अ म्यानेजर डेभलप्स अ न्यू आइडिया एन्ड गिव्स अ प्लान फर डेभलपमेन्ट अफ अ न्यू प्रोडक्ट इन हिज वर्क प्लेस देन ही इज क्यारिङ आउट विच अफ द फलोइङ रोल्स। अप्सन छ ए लाइजन, अप्सन बी अन्टरप्रेन्योर, अप्सन सी डिसमिनेटर अथवा अप्सन डी डिस्टर्बेन्स ह्यान्डलर। यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन बी हो, अन्टरप्रेन्योर। त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ हाम्रो, वाट इज मिन्ड बाई द टर्म म्यानेजमेन्ट बाई अब्जेक्टिभ। यसको चाहिँ अप्सन छ ए अ सिस्टम अफ गिभिङ द अथोरिटी टु क्यारी आउट सर्टेन जब्स बाई द दोज लोवर डाउन द म्यानेजमेन्ट हायरार्की, अप्सन बी द सिस्टम अफ म्यानेजमेन्ट द्याट इज बेस्ड अन ब्रिङिङ टुगेदर एक्सपर्ट इन्टु अ टिम, अप्सन सी द सेटिङ अफ अब्जेक्टिभ टु ब्रिङ अबाउट द अचिभमेन्ट अफ द कर्पोरेट गोल्स, अथवा अप्सन डी द कन्ट्रोल अफ द अर्गनाइजेसन बाई दोज इन द हेड अफिस। यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन सी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ, वाट इज मिन्ड बाई द टर्म एम्पावरमेन्ट। यसको चाहिँ अप्सन छ ए अ प्रोसेस अफ गिभिङ इम्प्लोइज ग्रेटर अटोनोमी एन्ड डिसिजन मेकिङ पावर्स, अप्सन बी अ सिस्टम द्याट एन्करेज वर्कर्स टु मुभ फ्रीली विदिन द वर्कफोर्स। त्यसै गरी अप्सन सी द अपर्च्युनिटी टु सेयर इन द कंपनीज प्रॉफिट, अथवा अप्सन डी अ फॉर्मल सिस्टम अफ लीडरशिप दैट रिलाइज ग्रेटली अन कंट्रोल। यसको चाहिँ राइट आन्सर अप्सन ए हो। त्यसै गरी हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ अब बैंकिङ टपिकबाट। बैंकिङ टपिकको हाम्रो पहिलो क्वेसन चाहिँ, कमर्शियल पेपर आर इस्युड बाई, अप्सन छ ए अ कंपनी टु अ बैंक, अप्सन बी बैंक्स टु कंपनीज, अप्सन सी बैंक्स टु बैंक्स अथवा अप्सन डी बैंक्स टु इट्स सप्लायर्स। यसको चाहिँ राइट आन्सर अप्सन सी हो, बैंक्स टु बैंक्स। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ हाम्रो, वान अफ द फलोइङ इज नट अ फङ्सन अफ रिटेल बैंकिङ। यसको अप्सन छ तपाईँको ए एक्सेप्टिङ फिक्स्ड डिपोजिट्स, अप्सन बी गिभिङ होम लोन्स, अथवा अप्सन सी गिभिङ एजुकेसन लोन्स अथवा अप्सन डी जोइन्ट भेन्चर। यसको चाहिँ राइट आन्सर अप्सन डी हो। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ हाम्रो, द रिलेसनसिप बिट्विन अ बैंकर एन्ड इट्स कस्टमर इज बेसिकली डैश। अप्सन छ ए अ डेटर एंड अ क्रेडिटर, बी अ ट्रस्टी एंड द बेनिफिशियरी, ऑप्शन सी अ प्रिंसिपल एंड एजेंट, ऑप्शन डी नन अफ दिस। इसको चाहिँ राइट आंसर ऑप्शन ए हो। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ हाम्रो, विच अफ द फलोइङ टर्म्स इज नट यूज्ड इन बैंकिङ वर्ल्ड। ऑप्शन छ ए होल्डिंग कंपनी, ऑप्शन बी पोस्ट डेटेड चेक, ऑप्शन सी टाइम डिपोजिट अथवा ऑप्शन डी सेंट्रीपेटल फोर्स। इसको चाहिँ ऑप्शन डी हो राइट आंसर। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ हाम्रो, विच अफ द फलोइङ इज नट अ फंक्शन अफ अ कमर्शियल बैंक। ऑप्शन छ ए एक्सेप्टिङ डिपोजिट, ऑप्शन बी इस्युइङ करेन्सी, ऑप्शन सी एडभान्सिङ लोन अथवा ऑप्शन डी क्रेडिट क्रिएसन। इसको चाहिँ राइट आंसर ऑप्शन सी हो। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन छ, एक्सपान्ड द टर्म स्विफ्ट। इसको ऑप्शन छ ए सोसाइटी फर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ऑप्शन बी सोसाइटी फर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ऑप्शन छ सी सोसाइटी फर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांसफर अथवा ऑप्शन डी सोसाइटी फर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फिजिकल ट्रांजेक्शन। इसको चाहिँ राइट आंसर ऑप्शन बी हो। त्यसै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन छ, रिलेशनशिप अफ बैंकर विथ पेई अफ ड्राफ्ट। ऑप्शन छ तपाईहरुको ए ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी, ऑप्शन बी ड्रअर एंड ड्रॉई, ऑप्शन बी लाइसेंसर एंड लाइसेंसी अथवा ऑप्शन डी प्रिंसिपल एंड एजेंट। इसको राइट आंसर चाहिँ ऑप्शन ए हो। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन छ, ओपन मार्केट ऑपरेशन इन्फ्लुएंसेस ए रिजर्व अफ कमर्शियल बैंक, बी द मार्केट रेट अफ इंटरेस्ट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी।
अथवा अप्सन डी नन अफ द एबभ। यसको राइट एन्सर अप्सन सी हो। त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेसन छ अ डकुमेन्ट इस्युड बाई द ब्याङ्क टु एक्नोलेज द रिसिप्ट अफ अ फिक्स्ड सम अफ मनी डिपोजिटेड ड्यास इज कल्ड। अप्सन छ ए कलेक्सन रिसिप्ट, अप्सन बी पे इन स्लिप, अप्सन सी फिक्स्ड डिपोजिट अथवा अप्सन डी बन्ड। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन सी हो। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन चाहिँ हाम्रो दि क्रेडिट पोलिसी अफ अ ब्याङ्क डज नट डिल विथ। अप्सन छ ए क्रेडिट रिस्क म्यानेजमेन्ट, अप्सन बी डकुमेन्टेसन स्ट्यान्डर्ड्स, अप्सन सी रिभ्यू एन्ड रिन्युअल अफ एडभान्सेस अथवा अप्सन डी आउटस्ट्यान्डिङ ब्यालेन्सेस इन डिपोजिट एकाउन्ट्स। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन डी हो। त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेसन छ विच अफ द फलोइङ इज नट अ ब्याङ्किङ रिलेटेड टर्म। अप्सन ए डिस्काउन्ट, अप्सन बी क्रेडिट, अप्सन सी रेनॉल्ड्स नम्बर अथवा अप्सन डी पोस्ट डेटेड चेक। यसको चाहिँ राइट एन्सर अप्सन सी हो। त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेसन छ द ब्याङ्कर एडभान्सेस मनी अगेन्स्ट इमोभेबल प्रोपर्टी ओन्ली वेन द प्रोपर्टी इज ड्यास टु द ब्याङ्कर। अप्सन ए मर्गेज, अप्सन बी प्लेज, अप्सन सी हाइपोथिकेटेड अथवा अप्सन डी नन अफ दिज। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन ए हो। त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो द एक्टिभिटी अफ पर्चेजिङ सेयर अफ भेरियस कम्पनी इज कल्ड। अप्सन ए अनलाइन ट्रेडिङ, अप्सन बी सेयर ट्रेडिङ, अप्सन सी रियल इस्टेट इन्भेस्टमेन्ट अथवा अप्सन डी कर्पोरेट ट्रेडिङ। यसको चाहिँ राइट एन्सर अप्सन सी हो। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो विच अफ द फलोइङ टर्म्स इज युज्ड इन फिल्ड अफ फाइनेन्स एन्ड ब्याङ्किङ। अप्सन ए मेटाबोलिजम, अप्सन बी जेनेटिक प्रोसेस, अप्सन सी एक्सपेरिमेन्टल एरर अथवा अप्सन डी डेप्ट इन्स्ट्रुमेन्ट। यसको चाहिँ राइट एन्सर अप्सन डी हो। त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो विच अफ द फलोइङ इज करेक्ट स्टेटमेन्ट। अप्सन ए नर्मली नो इन्ट्रेस्ट इज पेड अन करेन्ट डिपोजिट एकाउन्ट्स, अप्सन बी इन्ट्रेस्ट इज पेड अन करेन्ट एकाउन्ट एट द सेम रेट एज टर्म डिपोजिट एकाउन्ट, अप्सन सी द रेट अफ इन्ट्रेस्ट अन करेन्ट एकाउन्ट एन्ड सेभिङ एकाउन्ट आर द सेम, अप्सन डी नो इन्ट्रेस्ट इज पेड अन एनी डिपोजिट बाई द ब्याङ्क। एन्सर छ तपाईँको अप्सन ए। त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेसन छ ब्याङ्क्स मेक frequent changes in their product profile including introduction of new product etc. This is called A product control, B product enhancement, option C product marketing अथवा option D product enrichment। इसको चाहिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन छ क्रेडिट रेशनिङ इज अ डैश मेथड अफ क्रेडिट कंट्रोल। ऑप्शन छ त्यसको क्वान्टिटेटिभ, ऑप्शन बी क्वालिटेटिभ, ऑप्शन सी डाइरेक्ट अथवा ऑप्शन डी कन्टिन्युअस क्रेडिट कंट्रोल। इसको चाहिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो। त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो विच अफ द फलोइङ टर्म्स इज इन बैंकिंग फील्ड। ऑप्शन ए इंट्रेस्ट रेट स्वैप, ऑप्शन बी इनपुट डिवाइसेस, ऑप्शन सी सेडिमेंट्री, ऑप्शन डी जीरो आवर। इसको राइट आंसर चाहिँ ऑप्शन ए हो। त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेसन छ डैश कन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट सोर्स अफ फंड फर द बैंक। इसको चाहिँ ऑप्शन छ ए कैश, बी लोन, सी डिपोजिट, डी कमिशन। इसको चाहिँ राइट आंसर ऑप्शन सी हो। त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेसन छ डैश इज कंटिन्यूअस अरेंजमेंट बिट्वीन अ कमर्शियल बैंक एंड अ बिजनेस कंसर्न फॉर द परचेज ऑफ बुक डेबिट ऑफ द बिजनेस कंसर्न। ऑप्शन छ ए लीजिंग, बी वेंचर कैपिटल फाइनेंस, सी फैक्टरिंग अथवा डी क्रेडिट रेटिंग। इसको राइट आंसर चाहिँ ऑप्शन सी हो। त्यसै गरी अर्को क्वेश्चन छ इंटरनेट इज द चीपेस्ट अफ ऑल बैंकिंग चैनल एंड हेल्प्स बैंक टू गेन सब्सटेंशियली इन टर्म्स ऑफ डैश कॉस्ट। ऑप्शन छ इसको ए ऑडिटिंग, बी डिपोजिट, सी इन्वेस्टमेंट अथवा डी ट्रांजेक्शन। इसको राइट आंसर चाहिँ ऑप्शन डी ट्रांजेक्शन हो। त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेश्चन छ विच अफ द फलोइङ इज नट अफ बैंकिंग और फाइनेंस रिलेटेड टर्म। ऑप्शन ए क्रेडिट रैप, ऑप्शन बी ईएमआई, ऑप्शन सी हेल्ड टू मैच्योरिटी अथवा ऑप्शन डी डिफ्यूजन। राइट आंसर चाहिँ ऑप्शन डी डिफ्यूजन हो। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेश्चन छ थ्रू विच वन अफ द फलोइङ सोर्सेज डोमेस्टिक फंड आर रेज्ड बाई कंपनीज। अब इसको ऑप्शन चाहिँ इस प्रकार रहेको छ ए आईपीओ ओन्ली, एफपी ओन्ली, कमर्शियल पेपर्स अथवा सब ए ओन्ली सी अथवा अर्को ऑप्शन छ ओन्ली ए बी एंड सी, अर्को ऑप्शन छ ओन्ली ए एंड सी र ओन्ली ए। इसको चाहिए राइट आंसर ऑप्शन बी
अल ए बी एन्ड सी हो। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन छ द टर्म बैंक इज डिराइभ फ्रम द जर्मन वर्ड बैंक विच मिन्स ड्यास ए सिक्युरिटी, बी सेफ्टी, सी मनी, डी जोइन्ट स्टक फन्ड। यसको चाहिँ राइट एन्सर अप्सन डी हो। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो फिक्स्ड डिपोजिट एन्ड रिकरिङ डिपोजिट आर। अप्सन छ ए रिपेएबल आफ्टर एन एग्रिड पिरियड, अप्सन बी रिपेएबल अन डिमान्ड, अप्सन सी नट रिपेएबल अथवा अप्सन डी रिपेएबल आफ्टर डेथ अफ डिपोजिटर्स। यसको चाहिँ राइट एन्सर अप्सन ए हो। अब चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट टपिक फाइनान्सबाट हो। क्वेसन नम्बर 1 इन फाइनान्स वी रेफर टु द मार्केट वेयर न्यू सिक्युरिटिज आर बट एन्ड सोल्ड फर द फर्स्ट टाइम। अप्सन छ ए मनी मार्केट, अप्सन बी क्यापिटल मार्केट, अप्सन सी प्राइमरी मार्केट अथवा अप्सन डी सेकेन्डरी मार्केट। यसको चाहिँ राइट एन्सर अप्सन सी प्राइमरी मार्केट हो। त्यसै गरी हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ इफ अ म्यानेजर डेभलप्स अ न्यू आइडिया एन्ड गिभ अ प्लान फर डेभलपमेन्ट अफ अ न्यू प्रोडक्ट इन हिज वर्क प्लेस देन ही इज क्यारिङ आउट विच अफ द फलोइङ रोल्स। अप्सन ए लाइजन, अप्सन बी एन्टरप्रेन्योर, अप्सन सी डिसेमिनेटर अथवा अप्सन डी डिस्टर्बेन्स ह्यान्डलर। यसको चाहिँ राइट एन्सर अप्सन बी एन्टरप्रेन्योर हो। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो एन इन्क्रिज इन द रेट अफ इन्ट्रेस्ट मे रिड्युस द प्रॉफिट अफ कंपनी बिकॉज। ऑप्शन ए द कस्टमर विल हैव मोर मनी टू स्पेंड, ऑप्शन बी एक्सपोर्ट विल बिकम इजियर एंड चीपर, ऑप्शन सी कॉस्ट विल इंक्रीज सिंस ओवरड्राफ्ट एंड लोन विल बी मोर एक्सपेंसिव, ऑप्शन डी इट विल बिकम मोर रिवार्डिंग टू इन्वेस्ट इन न्यू प्रोडक्ट्स एंड प्रोजेक्ट। यसको चाहिँ एन्सर अप्सन सी हो। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो विच अफ द फलोइङ इज नट द फंक्शन अफ ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इन एन अर्गनाइजेसन। ऑप्शन ए रिक्रुटमेंट, ऑप्शन बी मेरिट रेटिंग, ऑप्शन सी फाइनेंशियल ऑडिटिंग अथवा ऑप्शन डी डिसिप्लिन। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर सी हो। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो नर्मली द डिमान्ड कर्व विल हैव अ डैश शेप। यसको चाहिँ अप्सन छ ए अपवर्ड स्लोपिङ, बी डाउनवर्ड स्लोपिङ, सी वर्टिकल, डी हॉरिजॉन्टल। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन बी हो डाउनवर्ड स्लोपिङ। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो इफ द डिफिसिट अफ अ बजेट इज कवर्ड बाई प्रिंटिंग अफ करेंसी नोट द रिजल्ट विल बी। ऑप्शन ए इन्फ्लेशन, ऑप्शन बी डिवैल्यूएशन, ऑप्शन सी डिप्रेशन, ऑप्शन डी रिसेशन। इसको चाहिए राइट आंसर ऑप्शन ए इन्फ्लेशन हो। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो अ मार्केट इज सेड टू बी ओलिगोपोलिस्टिक व्हेन। ऑप्शन ए इट इज डोमिनेटेड बाय अ सिंगल सप्लायर ऑफ अ प्रोडक्ट, ऑप्शन बी अ फ्यू सिग्निफिकेंट सप्लायर dominate the market for a product, ऑप्शन सी there are many small firms supplying the same product अथवा ऑप्शन डी there are many branded varieties of the production on the market। इसको चाहिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन व्हाट शुड बी द लॉन्ग टर्म फोकल पॉइंट of financial management in a firm। ऑप्शन ए the number and type of products or services provided by the firm, ऑप्शन बी the creation of value for shareholders, ऑप्शन सी the minimization of the amount of taxes paid by the firm अथवा ऑप्शन डी the profits earned by the firm। इसको राइट आंसर चाहिँ ऑप्शन बी हो। त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो क्वेसन नम्बर 9 हाम्रो व्हाट डज आरओआई स्ट्यान्ड्स फर इन फाइनान्स। ऑप्शन ए रेट अफ इन्भेस्टमेंट, ऑप्शन बी रेट अफ इंटरेस्ट, ऑप्शन सी रिस्क अफ इन्फ्लेशन वा ऑप्शन डी रियल ऑपरेटिंग इनकम। इसको चाहिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो। त्यस्तै गरी हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 10 व्हाट इज द फर्मुला टू क्यालकुलेट द प्रेजेंट भ्यालु पीवी अफ अ फ्यूचर कैश फ्लो। ऑप्शन छ हाम्रो यहाँ ऑप्शन ए पीवी इक्वल टू एफबी डिवाइड बाई 1 प्लस आर को पावर एन। त्यसै गरी ऑप्शन बी पीवी इक्वल टू एफबी मल्टीप्लाई 1 प्लस आर को पावर एन। त्यसै गरी ऑप्शन सी पीवी इक्वल टू एफबी प्लस 1 प्लस आर को पावर एन और ऑप्शन डी पीवी इक्वल टू एफबी 1 प्लस आर को पावर एन। इसको चाहिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन छ हाम्रो व्हाट इज द मेन पर्पस अफ एन इनिशियल पब्लिक अफरिङ आईपीओ। ऑप्शन ए टू अलाउ एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू सेल देयर शेयर्स, ऑप्शन बी टू रेज कैपिटल बाय इश्यूइंग न्यू शेयर्स टू द पब्लिक, ऑप्शन सी टू मर्ज टू कंपनी इनटू वन एंटिटी अथवा ऑप्शन डी टू प्रोवाइड डिविडेंड टू एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। इसको चाहिए करेक्ट आंसर बी हो। त्यस्तै गरी क्वेश्चन नंबर 12
विच फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रिप्रेजेंट अ लोन मेड बाई इन्वेस्टर टू अ गवर्नमेंट और कॉर्पोरेशन। इसको चाहिए ऑप्शन ए स्टॉक्स, बी बॉन्ड्स, सी म्यूचुअल फंड्स र डी अल अफ दिज हो। इसको चाहिँ करेक्ट एन्सर बी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अब अर्को टपिक छ टेक्नोलोजिकल नलेजबाट हाम्रो फर्स्ट क्वेसन छ स्टोरेज दैट retains its data after the power is turned off is referred to as option A direct storage, option B sequential storage, option C volatile storage अथवा option D non volatile storage। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर डी हो। त्यसै गरी अर्को क्वेसन छ between any two components of the computer system there is a pathway called a dash which allows the data transfer between them, A processor, B bus, C registers, D capacitors। इसको चाहिँ करेक्ट एन्सर बी बस हो। त्यसै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन छ डाटा क्यान बी मुभ फ्रम वन स्टोरेज मिडिया टु एनदर लेस एक्सपेन्सिभ मिडिया से एन अप्टिकल डिस्क। इसको चाहिँ अप्सन छ डाटा मिडिया, बी डाटा माइग्रेसन, सी डाटा लिमिटेसन अथवा डी डाटा स्टोरेज। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर बी हो डाटा माइग्रेसन। त्यस्तै गरी हाम्रो क्वेसन नम्बर 4 छ code consisting of bars or line of varying width or length that are computer readable or known as। इसका चाहिँ ऑप्शन छ ए NSCEI कोड, बी अ मैग्नेटिक टेप, सी अ बार कोड, डी एन OCR स्कैनर। इसको चाहिँ करेक्ट एन्सर सी हो। त्यसै गरी अर्को क्वेसन छ हाम्रो एक्सेस टाइम अल्सो नोन एज डैश रेफर्स टू हाउ क्विकली द मेमोरी कैन respond to a read or write request। ऑप्शन छ ए रेस्पॉन्ड टाइम और लेटेंसी, ऑप्शन बी रेस्पॉन्स टाइम और लेटरल, ऑप्शन सी रेफर टाइम और लेटेंसी, ऑप्शन डी रीड और राइट टाइम फॉर लेटेंसी। इसको चाहिँ करेक्ट एन्सर ऑप्शन ए हो। त्यसै गरी अर्को क्वेसन छ हाम्रो ड्यूरिङ द डैश पोर्सन अफ द इन्फर्मेसन प्रोसेसिङ साइकल द कंप्यूटर एक्वायर्स डाटा फ्रम सम सोर्स। ऑप्शन छ ए स्टोरेज एंड आउटपुट, ऑप्शन छ बी आउटपुट, ऑप्शन सी स्टोरेज, ऑप्शन सी डी आउटपुट। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर डी हो। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन छ हाम्रो ऑल द क्यारेक्टर्स दैट अ डिवाइस कैन यूज इज कॉल्ड इट्स। ऑप्शन ए कीबोर्ड क्यारेक्टर्स, ऑप्शन बी क्यारेक्टर कोड्स, ऑप्शन सी क्यारेक्टर अल्फाबेट अथवा ऑप्शन डी स्किल सेट। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर ऑप्शन ए हो। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन छ हाम्रो एनी पिस अफ डाटा क्यान बी रिटर्न इन अ कन्स्टेंट टाइम रिगार्डलेस अफ इट्स फिजिकल लोकेशन एंड वेदर और नॉट इट इज रिलेटेड टू द प्रीवियस पीस अफ डाटा यूजिंग विच अफ द फॉलोइंग, ए रैम, बी रोम, सी CPU, डी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर ए रैम हो। त्यसै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन छ वाट इज HTTP 404। ऑप्शन छ ए एन एरर मैसेज इंडिकेटिंग सर्वर नॉट फाउंड, ऑप्शन बी एन एरर मैसेज इंडिकेटिंग मूव परमानेंटली, ऑप्शन सी एन एरर मैसेज इंडिकेटिंग फॉरबिडन, ऑप्शन डी एन एरर मैसेज इंडिकेटिंग सर्वर फाउंड। इसको चाहिँ करेक्ट एन्सर ऑप्शन ए हो। त्यसै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन छ विच अफ द फलोइंग डिवाइस इज अ वोलेटाइल स्टोरेज। यसको चाहिँ ऑप्शन छ ए रैम, बी हार्ड डिस्क, सी मैग्नेटिक टेप अथवा डी फ्लॉपी डिस्क। इसको चाहिँ करेक्ट एन्सर ऑप्शन ए रैम हो। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन छ व्हाट इज द यूज अफ डिजिटाइजर एज एन इनपुट डिवाइस। ऑप्शन ए टू कन्वर्ट ग्राफिक एंड पिक्टोरियल डाटा इन्टु बाइनरी इनपुट्स, ऑप्शन बी टू कन्वर्ट ग्राफिक एंड पिक्टोरियल डाटा इन्टु एनालॉग इनपुट्स, सी डिबगिङ अथवा डी नन अफ द एबव। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर ए हो। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 12 मेसिन्टोस एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोडक्ट अफ ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी एप्पल, ऑप्शन सी इंटेल अथवा ऑप्शन डी गूगल। करेक्ट एन्सर चाहिँ बी एप्पल हो। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 13 विच पार्ट अफ द कंप्यूटर कैरीज आउट द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। ऑप्शन ए कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन बी प्रोसेसिंग एलिमेंट, ऑप्शन सी बायोस अथवा ऑप्शन डी मदरबोर्ड। करेक्ट एन्सर यसको ऑप्शन बी हो। त्यसै गरी अर्को क्वेसन विच अफ द फलोइंग लाइन्स विदिन द CPU। ऑप्शन ए प्राइमरी मेमोरी, ऑप्शन बी सेकेंडरी मेमोरी, ऑप्शन सी माउस, ऑप्शन डी कीबोर्ड। करेक्ट एन्सर चाहिँ ए प्राइमरी मेमोरी हो। त्यसै गरी अर्को क्वेसन देयर इज एन इन्सिडेन्स व्हेन कंप्यूटर स्पीड बिगन टू ड्रप इन द सिचुएसन विच एलिमेंट अफ मेमोरी इज लाइकली टू बी ओभरलोडेड।
अप्सन ए ऱ्याम, अप्सन बी रोम, अप्सन सी फ्ल्यास मेमोरी अथवा अप्सन डी क्यासी मेमोरी। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर ए ऱ्याम हो। त्यसै गरी 16 नम्बर फुल फर्म अफ ऱ्याम, ऱ्याम इक्वल टु ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी। फुल फर्म अफ बायस, बायसको फुल फर्म चाहिँ बेसिक युनिट आउटपुट सिस्टम हो। त्यसै गरी फुल फर्म अफ रोम, रोमको फुल फर्म रिड ओन्ली मेमोरी हो। त्यसै गरी फुल फर्म अफ एचटीटीपी, एचटीटीपीको फुल फर्म हो हाइपर टेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकल। त्यसै गरी फुल फर्म अफ डब्ल्युडब्ल्युडब्ल्यूको वर्ल्ड वाइड वेब हो। त्यस्तै गरी हाम्रो नेक्स्ट टपिक छ भर्बल एबिलिटीबाट। अब यहाँ जुन डाइरेक्सन हाम्रो दिएको छ यो डाइरेक्सनको एकर्डिङ नै हामीले क्वेसनहरू यो तलको क्वेसनहरू बनाउने हो। यहाँ चाहिँ लेखेको छ रिड इच सेन्टेन्स टु फाइन्ड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल एरर इन इट। द एरर इफ एनी विल बी on a part of the sentence, the letter of that part is the answer. If there is no error, the answer is D. Ignore the errors of punctuation if any. अब हेर्नु हामीले यहाँ चाहिँ क्वेसन हेर्ने। अब क्वेसन नम्बर 1 छ सल्भ एज पर द डाइरेक्सन गिभन एबभ। यहाँ चाहिँ अप्सनहरू दिएको छ। अप्सन ए डु यु नो, अप्सन बी टु प्ले, अप्सन सी द गिटार, अप्सन डी नो एरर। यहाँ चाहिँ हाम्रो अप्सन बी हुन्छ टु प्ले। त्यसै गरी अर्को क्वेसन छ अप्सन ए आफ्टर लिभिङ हिज अफिस, अप्सन बी ही वेन्ट डाइरेक्टली, अप्सन सी टु अ रेस्टुरेन्ट अथवा अप्सन डी नो एरर। अब यसमा कुनै पनि एरर देखिरहेको छैन त्यसले अप्सन डी नो एरर हो। फेरि पनि यहाँ चाहिँ हाम्रो डाइरेक्सन देखाइरहेछ रिड इच सेन्टेन्स टु फाइन्ड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल एरर इन इट। The error, if any, will be in one part of the sentence. The letter of the part is the answer. If there is no error, the answer is E. Ignore the errors of punctuation if any. ल त हाम्रो यहाँ 3 नम्बर क्वेसन छ सल्भ एज पर द डाइरेक्सन गिभन एबभ। यहाँ अप्सनहरू दिएको छ रमेश डिड नट लाइक, अप्सन बी लिभिङ हिज ओल्ड प्यारेन्ट्स अलोन इन द हाउस, अप्सन सी but he had no alternative, option D as he has to go out to work अथवा option E no errors। इसको चाहिए राइट आंसर option D हो as he has to go out to work। त्यसै गरी हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ solve as per the direction given above। The observers felt that option B the stronger team had to face, option C defeat because the players, option D didn't play wholehearted, option E no error। इसको चाहिए राइट आंसर ऑप्शन डी didn't play wholehearted हो। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो डाइरेक्सन क्वेसन नम्बर 5 to 8। इन द फलोइङ द क्वेसन चुज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मिनिङ अफ द गिभन वर्ड। यहाँ चाहिँ तपाईँको क्वेसन छ रेस्क्यू। अब यसको बेस्ट एक्सप्रेसन द मिनिङ अफ द गिभन वर्ड तल हेर्ने हामी अप्सन कमान्ड, अप्सन बी हेल्प, अप्सन सी डिफेन्स, अप्सन डी सेफ्टी। यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन बी हेल्प हो। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन छ अवेकेन्ड। अब यसको अप्सन छ एनलाइटेन्ड, अप्सन बी रियलाइज्ड, अप्सन सी सुक, अप्सन डी वेकेन। यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन डी हो। त्यस्तै गरी हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ इन्सल्भेन्ट। यसको चाहिँ अप्सन छ ए पुअर, बी ब्याङ्क्रप्ट, सी पेनलाइजेस, अप्सन डी ब्रोक। यसको चाहिँ राइट आन्सर चाहिँ अप्सन बी ब्याङ्क्रप्ट हो। त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन छ र्याकलेस। यसको चाहिँ अप्सन छ कोरेजियस, बी ऱ्यास, सी बोल्ड, डी डेयरिङ। यसको राइट आन्सर चाहिँ ऱ्यास हो। त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेसन छ डाइरेक्सन क्वेसन नम्बर 9। इन इच अफ द सेन्टेन्सेस गिभन बिलो अ वर्ड इज प्रिन्टेड इन बोल्ड। बिलो इट 4 choices are given. Pick of the one which most nearly the same in meaning as the word printer in bold can replace it without altering the meaning of the sentence। अब यहाँ हेर्नु Swift is known in the world of letter for his misogynism। ऑप्शन छ hate for mankind, ऑप्शन B hate for womankind, ऑप्शन C love for the reasonable, ऑप्शन D love for the womankind। इसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन बी हेट फर वुमेन काइन्ड हो। त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेसन छ डाइरेक्सन क्वेसन नम्बर 10 to 12। इन द फलोइङ क्वेसन चुज द वर्ड विथ द एक्ज्याक्ट अपोजिट अफ द गिभन वर्ड्स। क्वेसन नम्बर 10 छ ल्यान्ड। यसको अप्सन छ बरो,
अप्सन बी चिट, अप्सन सी पाउन, अप्सन डी हायर। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन ए 12 हो। त्यस्तै गरी 11 नम्बर क्वेसन छ फ्रुगल। अप्सन छ ए कपियस, बी एक्स्ट्राभेजेन्ट, सी जेनरस अथवा डी ओस्टेन्टेसियस। त्यस्तै गरी हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ एक्स्ट्राभेजेन्स। अप्सन ए लग्जरी, अप्सन बी पोभर्टी, अप्सन सी इकोनोमिकल अथवा अप्सन डी चिपनेस। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन छ डाइरेक्सन क्वेसन नम्बर 13 to 14। Each sentence below consists of a word or a phrase which is bold. It is followed by 4 words or phrases. Select the word or phrase which is closest to the opposite in meaning of the bold word or phrase. अब चाहिँ क्वेसन नम्बर 13 छ एडभर्सिटी टिचेस मैन टू बी हम्बल एंड सेल्फ रिलायंट। अप्सन छ यसको ए सिन्सियरिटी, अप्सन बी एनिमोसिटी, अप्सन सी क्यूरियोसिटी अथवा अप्सन सी प्रोस्पेरिटी। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन डी प्रोस्पेरिटी हो। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन छ अनसेटल्ड कन्डिसन इन द ल्यान्ड लेड टु एक्जोडस अफ 100 इट्स सिटिजन्स। यसको चाहिँ अप्सन छ अप्सन ए इन्भेसन, अप्सन बी एन्ट्री, अप्सन बी एमिग्रेसन अथवा अप्सन डी एक्सपल्सन। यसको चाहिँ राइट एन्सर अप्सन बी एन्ट्री हो। त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेसन डाइरेक्सन क्वेसन नम्बर 15। पिक आउट द मोस्ट इफेक्टिभ वर्ड्स फ्रम द गिभन वर्ड्स टु फिल इन द ब्ल्याङ्क टु मेक द सेन्टेन्सेस मिनिङफुल कम्प्लिट। क्वेसन नम्बर 15 द रिभर ओभरफ्लोड इट्स ड्यास एन्ड फ्लडेड द एरिया। अप्सन छ ए एजेस, बी फ्रन्ट्स, अप्सन सी लिमिट्स, अप्सन डी ब्याङ्क्स। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन डी ब्याङ्क्स हो। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन छ अब यसको डाइरेक्सन क्वेसन नम्बर 16। इन इच सेन्टेन्सेस बिलो 4 वर्ड्स विच आर लेटर ए बी सी एन्ड डी have been printed in bold type, one which may be either inappropriate in the context of the sentence or wrongly spelled. The letter of that word is answered. If all the 4 words are appropriate and also correctly spelled, mark E, that is all correct as the answer. Question number 16 here now. Solve as per the direction given above. Option cha A, people in our country are distressed. Option B, by the spate of strikes and almost. Option C, perpetual go slow, and option D, incredibly low productivity. अथवा ऑप्शन E, all correct. इसको राइट आंसर चाहिए ऑप्शन डी incredibly low productivity हो। जैसे करिए नेक्स्ट क्वेश्चन सा डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 16। Which of phrases given below each sentences should replace the phrase printed in bold type to make the grammatically correct? If the sentences is correct as it is, mark E as the answer. ऑप्शन है तपाईँको A, for their attempt to repair, option B, in their attempting to repair, option C, with their attempt to repair, अथवा option D, in their attempt for repairs, अथवा ऑप्शन E, no correction required. इसको राइट आंसर चाहिए ऑप्शन E, no correction required हो। इससे करिए नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 18। इन क्वेश्चन बिलो each passage consists of 6 sentences. For first and 6th sentences are given in the beginning. The middle 4 sentences in each have been removed and jumbled up. These are labeled as P, Q, R and S. Find out the proper order for the 4 sentences. क्वेश्चन नंबर 18 हेर्ने। अब यो स्टेटमेन्टहरु तपाईहरु रिड गर्नु होला। यो स्टेटमेन्टहरु रिड गरिसकेपछि यसमा प्रोपर सिक्वेन्स शुड बी कुन हुन्छ यहाँ अप्सनहरु दिएको छ। ऑप्शन ए QRPS, ऑप्शन बी QSPR, ऑप्शन सी QRSP अथवा ऑप्शन डी QPRS। यसको चाहिँ राइट आन्सर ऑप्शन ए QRPS हो। त्यसैगरी नेक्स्ट क्वेश्चन छ हाम्रो डाइरेक्सन क्वेश्चन नंबर 19-20। Each question consists of 2 words which have a certain relationship to each other, followed by 4 pairs of related words. Select the pair which has the same relationship. अब चाहिँ यसको 19 नंबर हेर्नु।
10 को यहाँ चाहिँ डेसिमल छ 10 डेसिमल। त्यस्तै गरी 7 सेप्टेट, अप्सन बी 4 क्वार्टेट, अप्सन सी 2 को बाइनरी, अप्सन डी को 5 को क्विन्स। यसको चाहिँ राइट एन्सर अप्सन सी 2 को बाइनरी हो। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन छ 20 नम्बर, दिवा ओपेरा, यसको चाहिँ अप्सन ए प्रोड्युसर को थिएटर, अप्सन बी डाइरेक्टर को ड्रामा, अप्सन सी कंडक्टर को बस, अप्सन डी थेस्पियन को प्ले। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन डी थेस्पियन को प्ले हो। अब चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट टपिक लजिकल रिजनिङबाट हो र त अब हामी लजिकल रिजनिङबाट क्वेसन हेर्ने हो। यहाँ चाहिँ डाइरेक्सन क्वेसन नम्बर 1 दिएको छ। अ गुड वे टु एप्रोच दिस टाइप अफ क्वेसन इज टु युज द फलोइङ सेन्टेन्सेस। अ डैश could not exist without dash, find the word that names unnecessary part of the underlined word। क्वेश्चन छ ए रेसिपी, यसको चाहिँ अप्सन छ ए डिजर्ट, बी डाइरेक्सन, सी कुकबुक अथवा डी युटेन्सिल। यसको राइट एन्सर चाहिँ बी डाइरेक्सन हो। त्यस्तै गरी सेकेन्ड क्वेश्चन छ डाइरेक्सन क्वेश्चन नम्बर 2, अ गुड वे टु फिगर आउट द रिलेसनशिप इन गिवन क्वेश्चन टु मेक अप अ sentences that describe the relationship between the first two words, then try to use the same sentences to find out which of the answer choices complete the same relationship with the third word। अब चाहिँ हाम्रो क्वेश्चन नम्बर 2 छ यहाँ, एक्सरसाइज इज टु जिम एज इटिङ इज टु, अप्सन ए फूड, अप्सन बी डाइटिङ, अप्सन सी फिटनेस, अप्सन सी डी रेस्टुरेन्ट। यसको चाहिँ राइट एन्सर अप्सन डी रेस्टुरेन्ट हो। त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेश्चन छ डाइरेक्सन क्वेश्चन नम्बर 3, चूज द पिक्चर दैट वुड गो इन द एम्प्टी बॉक्स सो दैट द टू बॉटम पिक्चर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द टप टू आर रिलेटेड। अब यहाँ चाहिँ पिक्चर दिएको छ, यो पिक्चर हेरी तपाईहरु अप्सन हेर्नु, अप्सन ए को 1, अप्सन बी को 2, अप्सन सी को 3, अप्सन डी को 4। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन बी को 2 हो। यहाँ चाहिँ पिक्चर हेर्न तपाईहरु पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो नेक्स्ट क्वेश्चन छ डाइरेक्सन क्वेश्चन नम्बर 4, द वर्ड इन द बटम रो आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द वर्ड्स इन द टप रो फर इच आइटम, फाइन्ड द वर्ड दैट कम्प्लिट्स द बटम रो अफ वर्ड्स। अब चाहिँ यहाँ चाहिँ कार्पेन्टर छ, पेडिट्रिशियन छ, यसको चाहिँ सो स्टेथोस्कोप छ, नेलको चाहिँ क्वेश्चन मार्क छ। अप्सन चाहिँ यहाँ थर्मोमिटर, बी बेबी, सी डॉक्टर अथवा डी इलनेस। यसको राइट एन्सर चाहिँ थर्मोमिटर हो। अब अर्को क्वेश्चन डाइरेक्सन क्वेश्चन नम्बर 5, चूज द पेयर दैट बेस्ट रिप्रेजेंट अ सिमिलर रिलेशनशिप टू द वन एक्सप्रेस्ड इन द ओरिजिनल पेयर अफ वर्ड्स। क्वेश्चन नम्बर 5, अब यहाँ चाहिँ क्वेश्चनमा छ डेल्टोइड को मसल। त्यस्तै गरी अप्सनमा छ, अप्सनमा हाम्रो छ ए रेडियस को बोन, बी ब्रेन नर्भ, सी टिश्यू अर्गन, डी ब्लड को वेन र ई स्कैल्पेल को इंसिजन। इसको राइट आंसर चाहिँ ए रेडियस को बोन हो। त्यस्तै गरी हाम्रो नेक्स्ट क्वेश्चन छ डाइरेक्सन क्वेश्चन नम्बर 6, इन each question below is given a statement followed by two conclusion number 1 and 2. You have to assume everything in the statement to be true, then consider the two conclusion together and decide which of them logically follows beyond a reasonable doubt from the information given in the statement. अब यहाँ चाहिँ give answer छ, ऑप्शन छ if only conclusion 1 follows, option B if only conclusion 2 follows, option C if either 1 or 2 follows, option D if neither 1 nor 2 follows, and option E if both 1 and 2 follows. Question number 6 यहाँ छ statements, the serious accident in which a person was run down by a car yesterday had again focused attention on the most unsatisfactory state of roads. Conclusion छ इसको 1, the accident that occurred was fatal. Option 2 छ several accidents have so far taken place because of unsatisfactory state of roads. अब चाहिँ ऑप्शन छ इसको ऑप्शन ए only conclusion 1 follows, ऑप्शन बी only conclusion 2 follows,
अप्सन सी आइदर 1 or 2 follows, अप्सन डी नाइदर 1 nor 2 follows, अप्सन ई बोथ 1 and 2 follows। यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन ई बोथ 1 and 2 follow। त्यसै गरी अर्को क्वेसन छ हाम्रो डाइरेक्सन क्वेसन नम्बर 7। इन इच अफ द फलोइङ क्वेसन अ स्टेटमेंट or group of statement is given followed by some conclusion without resolving anything yourself. Choose the conclusion which logically follow from the given statement. Question number 7. A forest has as many sandal trees as it has Ashoka trees. 3/4 of the tree are old ones and half of the trees are at the flowering stage. Option छ तपाईहरुको all Ashoka trees are at the flowering stage. Option B all sandal tree are at the flowering stage. Option C at least 1/2 of the Ashoka trees are old. Option D 1/2 of the sandal tree are at the flowering stage. अथवा ऑप्शन ई नन अफ दिस। यसको राइट आन्सर चाहिँ ऑप्शन ई नन अफ दिस हो। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन छ डाइरेक्सन क्वेसन नम्बर 8। इन इच क्वेसन बिलो इज गिवन ए स्टेटमेंट फॉलोड बाय 2 assumption नंबर्ड 1 and 2. You have to consider the statement and the following assumption and decide which of the assumption is implicit in the statement. Give answer. ऑप्शन छ तपाईहरुको ए if only assumption 1 is implicit. Option B if only assumption is 2 is implicit. Option C if either 1 or 2 is implicit. Option D if neither 1 nor 2 is implicit. अथवा ऑप्शन ई if both 1 and 2 are implicit। अब क्वेश्चन नंबर 8 छ हाम्रो स्टेटमेंट beware of dogs. Our dog do not bark but they are trained to distinguish between genuine guests and intruders. इसको चाहिँ assumption छ। assumption number 1 barking dogs bite rarely. assumption number 2 our dogs could be dangerous for intruders. अब चाहिँ यसको ऑप्शन छ only assumption 1 is implicit. Option B only assumption 2 is implicit. Option C either 1 or 2 is implicit. Option D neither 1 nor 2 is implicit. अथवा ऑप्शन E both 1 and 2 are implicit। अब चाहिँ अर्को क्वेसन छ हाम्रो डाइरेक्सन क्वेसन नम्बर 9 10। इन इच क्वेसन गिवन बिलो इज गिवन ए स्टेटमेंट फलो बाई 2 assumption। त्यस्तै गरी यो पनि क्वेसनहरु छ तपाईहरु यो स्टेटमेन्टहरु रिड गर्नु होला। यो 9 नम्बरको क्वेसनहरु पनि तपाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। 9 नम्बरको पनि क्वेसनको चाहिँ ऑप्शन बी चाहिँ करेक्ट हो, यो हेर्नु होला। त्यस्तै गरी यो पनि स्टेटमेन्ट छ 10 नम्बरको स्टेटमेन्ट टुडे आई मस्ट सैटिस्फाई माइसेल्फ ओन्ली बाई लुकिङ एट अ पिंक हेडेड डग इन एनी एन्साइक्लोपीडिया। assumption number 1 छ पिक हेडेड डग्स आर एज गुड एज एक्सटिंक्ट नाउ। अनि assumption number 2 छ पीपल रेफर टू एन्साइक्लोपीडिया टू नो ओन्ली अबाउट थिंग्स विच डू नट एक्जिस्ट नाउ। अब यसको assumptionहरु छ ऑप्शन ए ओन्ली assumption 1 इज इम्प्लिसिट। ऑप्शन बी ओन्ली assumption 2 इज इम्प्लिसिट। ऑप्शन सी आइदर 1 or 2 इज इम्प्लिसिट। ऑप्शन डी नाइदर 1 nor 2 इज इम्प्लिसिट। ऑप्शन ई both 1 and 2 are implicit। यसको राइट आन्सर चाहिँ ऑप्शन ए ओन्ली assumption 1 इज इम्प्लिसिट हो। त्यसै गरी डाइरेक्सन क्वेसन नम्बर 11। इन इच क्वेसन बिलो इज गिवन ए स्टेटमेंट followed by 2 assumptions numbered 1 and 2. You have to consider the statement and the following assumption and decide which of the assumption is implicit in the statement. Give answer। अब यहाँ चाहिँ assumptionहरु छ A if only assumption 1 is implicit, B if only assumption 2 is implicit, C if either 1 or 2 is implicit, D if neither 1 nor 2 is implicit, E if both and 1 and 2 are implicit। अब चाहिँ यहाँ क्वेसन नम्बर 11 छ स्टेटमेंट इन द रिसेंट इम्पोज्ड वार ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन वाज डिसऑनर्ड बाय द इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग एंड साइंटिफिकली एडवांस्ड सुपर पावर। इसको चाहिए assumption नंबर 1 छ सुपर पावर्स नीड नॉट टेक एनी हीड ऑफ ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन। assumption नंबर 2 छ ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन मस्ट हैव बीन अगेंस्ट द इम्पोजिशन ऑफ वार। चाहिए ऑप्शन छ इसको ओनली assumption 1 इज इम्प्लिसिट। ऑप्शन बी ओनली assumption 2 इज इम्प्लिसिट। ऑप्शन सी आइदर 1 or 2 इज इम्प्लिसिट। ऑप्शन डी नाइदर 1 nor 2 इज इम्प्लिसिट। अथवा ऑप्शन ई both 1 and 2 are implicit। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 12 नम्बर छ
In each question below is given a statement followed by two assumptions number 1 and E. You have to consider this statement and the following assumption and decide which of the assumption is implicit in this statement. त्यस्तै गरी छ यो पनि यहाँ पनि एकचोटि रिड गर्नु होला। यहाँ चाहिँ 12 नम्बरको स्टेटमेन्ट छ द टेस्ट अफ फूड कन्ट्रिब्युट्स टु द इन्टेक्स अफ नरिसमेन्ट विच इज एसेन्सियल फर द सर्भाइभल अफ ह्युमन बिङ्स। एजम्पसन नम्बर 1 छ ह्युमन बिङ टेक फूड फर द इन्जोयमेन्ट अफ इट टेस्ट। अप्सन बी 2 नम्बर ह्युमन बिङ्स एक्सपिरियन्स द टेस्ट अफ फूड। यो चाहिँ अप्सन ए ओन्ली एजम्पसन 1 इज इम्प्लिसिट। अप्सन बी ओन्ली एजम्पसन 2 इज इम्प्लिसिट। अप्सन सी आइदर 1 or 2 is implicit. Option D neither 1 nor 2 is implicit. Option E both 1 and 2 are implicit. इसको राइट आन्सर अप्सन बी हो। त्यसै गरी हाम्रो क्वेसन नम्बर 13 छ यो पनि स्टेटमेन्ट दिएको रहेछ। यो स्टेटमेन्ट हामीले रिड गर्ने हो अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ स्टेटमेन्ट दिस इज रिपोर्टेड दैट टफ विटामिन ई प्रेजेंट इन फ्रेश फ्रूट्स एंड भेजिटेबल इज बेनिफिशियल फर ह्यूमन बॉडी। Capsule vitamin E does not have the some effect on human body. अब चाहिँ यहाँ एजम्पसन नम्बर 1 छ द सेल अफ क्याप्सुल भिटामिन ई सुड बी ब्यान्ड। अप्सन 2 नम्बर चाहिँ एजम्पसन 2 नम्बर चाहिँ पिपल सुड बी इन्करेज टु टेक फ्रेस फ्रुट्स एन्ड भेजिटेबल टु मिट दि बडीज रिक्वायरमेन्ट फर भिटामिन ई। अब यहाँ चाहिँ अप्सनहरू दिएको छ यसको चाहिँ अप्सन बी राइट एन्सर हो। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 14-15 यहाँ चाहिँ फेरि पनि यहाँ हाम्रो स्टेटमेन्टहरू दिएको छ। यो स्टेटमेन्टहरू रिड गर्ने हामीले सुड देयर बी ओन्ली वन रेट अफ इन्ट्रेस्ट फर टर्म डिपोजिट अफ भेरी ड्युरेसन इन ब्याङ्क्स। अनि यहाँ चाहिँ आर्गुमेन्ट छ 1 नम्बर छ नो पिपल विल रिफ्रेन फ्रम किपिङ मनी फर लङ्गर ड्युरेसन रिजल्टिङ इन्टु रिडक्सन अफ लिक्विडिटी लेभल अफ ब्याङ्क्स। अप्सन 2 छ यस this will be much simple for the common people and they may be encouraged to keep more money in banks। यसको चाहिँ अप्सनहरू छ ओन्ली आर्गुमेन्ट 1 इज स्ट्रङ। अप्सन बी ओन्ली आर्गुमेन्ट 2 इज स्ट्रङ। अप्सन सी आइदर 1 or 2 इज स्ट्रङ। अप्सन डी नाइदर 1 or 2 इज स्ट्रङ। अप्सन ई बोथ 1 and 2 आर स्ट्रङ। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन ए हो। त्यस्तै गरी 15 नम्बर क्वेसनको स्टेटमेन्ट हेर्ने should individual or institute having treasures of national significance like Nobel Prizes hand them over to the central government for their safe custody। यहाँ चाहिँ आर्गुमेन्ट 1 मा छ यस द इन्डिभिजुअल और इन्स्टिट्युसन डु नट ह्याभ इनफ रिसोर्सेस टु प्रोटेक्ट देम। 2 नम्बर आर्गुमेन्टमा चाहिँ नो दिज आर द प्रोपर्टी अफ द इन्डिभिजुअल और इन्स्टिट्युसन हु विन देम एन्ड सुड बी इन देयर कस्टडी। यसको अप्सनहरू दिएको छ यसको राइट अप्सन चाहिँ अप्सन बी हो ओन्ली आर्गुमेन्ट 2 इज स्ट्रङ। त्यसै गरी हाम्रो क्वेसन नम्बर 16 हेर्ने हो इन इच क्वेसन बिलो इज गिभन अ स्टेटमेन्ट फलो बाई 3 कोर्स अफ एक्सन नम्बर 1, 2 and 3। यू हेभ टु एज्युम एभ्रिथिङ इन द स्टेटमेन्ट टु बी ट्रु देन डिसाइड विच अफ द 3 गिभन सजेस्टेड कोर्स अफ एक्सन लजिकली फलो फर पर्सुइङ। क्वेसन नम्बर 16 हेर्ने हामी स्टेटमेन्ट दिएको छ ड्रिङ्किङ वाटर सप्लाई टु New Bombay has been suspended till further order from Maharashtra Pollution Control Board following pollution of Patal Ganga River caused by discharge of effluents from some chemical industries। Courses of action number 1 the industries responsible for discharging effluents into the river should be asked to close down immediately। Number 2 the river water should immediately be treated chemically before resuming supply। Number 3 the pollution control board should check the nature of effluents being discharged into the river by industries at regular intervals। त्यस्तै गरी हाम्रो अप्सनहरू छ अप्सन ए ओन्ली 1 follows। अप्सन बी ओन्ली 2 and 3 follows। अप्सन सी ओन्ली 3 follows। अप्सन 4 all follows। अप्सन ई none of these। अब चाहिँ हाम्रो यो अप्सन सी ओन्ली 3 फलोज राइट एन्सर हो। त्यसै गरी हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन डाइरेक्सन नम्बर क्वेसन नम्बर 17 को इच क्वेसन गिभन बिलो कन्सिस्ट अफ द स्टेटमेन्ट फलोड बाई 3 or 4 आर्गुमेन्ट्स नम्बर्ड 1, 2, 3 and 4। you have to decide which of the arguments is or are
strong arguments and which is or are weak arguments, and accordingly choose your answer from the alternative given below each question. अब त्यस्तै गरी हाम्रो 17 को स्टेटमेंट छ, should all the student graduating in any discipline desirous of pursuing post graduation of the students of their choice be allowed to enroll in the post graduate courses. इसको चाहिँ आर्गुमेंट्स छ. Argument number 1, yes, the students are the best judge of their capabilities and there should not be restriction for joining postgraduate courses. Option 2, no, the student need to study relevant subject in graduate courses to enroll in postgraduate courses and the student must fulfill such conditions. Argument number 3, no, there are not enough institute offering postgraduate courses which can accommodate all the graduate desirous of seeking postgraduate education of their own choice. अब चाहिँ यसको अप्सन हेर्नु होला. None is strong, option A. Option B, only 1 and 2 are strong. Option C, all are strong. Option D, only 1 and 3 are strong. Option E, none of these. यसको चाहिँ राइट एन्सर नन अफ दिज हो. त्यसै गरी हाम्रो डाइरेक्सन क्वेश्चन नम्बर 18-19 हेर्ने हो. यसको चाहिँ इन इच क्वेश्चन बिलो इज गिवन ए स्टेटमेंट फलोड बाई 3 एजम्पसन numbers 1, 2 and 3. You have to consider the statement and the following assumption. Decide which of the assumption is implicit in the statement and choose your answer accordingly. 18 number को statement हेर्ने हामी. In the recently held All India Commerce Conference, the session on management of service sector in India surprisingly attracted large number of participants and also received a very good media coverage in the leading newspaper. यसको एजम्पसनहरु छ. 1, people were not expecting such as encouraging response for service sector. Assumption number 2, service sector is not managed properly in India. Assumption number 3, media is always very positive towards service sector. इसको अप्सनहरु दिएको छ. नन इज इम्प्लिसिट, ऑप्शन ए. बी, ओन्ली 1 इज इम्प्लिसिट. ऑप्शन सी, ऑल आर इम्प्लिसिट. ऑप्शन डी, 2 and 3 आर इम्प्लिसिट. यसको चाहिँ राइट एन्सर ऑप्शन 2 हो. त्यसै गरी अर्को स्टेटमेन्ट हामी हेर्ने 19 नम्बर को. फ्लाई विथ अस एन्ड एक्सपिरियन्स द प्लेजर अफ फ्लाइङ एन एडभर्टिजमेन्ट बाई एन एयरलाइन्स. Assumption number 1, more passengers may be attracted to travel by the airline after reading the advertisement. Assumption number 2, people generally may prefer an enjoyable flight. Assumption number 3, other airline may not be offering the same facilities. ऑप्शनहरु यहाँ दिएको रहेछ. ऑप्शन ए, नन इज इम्प्लिसिट. ऑप्शन बी, ओन्ली 1 इज इम्प्लिसिट. ऑप्शन सी, ओन्ली 2 इज इम्प्लिसिट. ऑप्शन चाहिँ डी, ओन्ली 2 and 3 are implicit. ऑप्शन ई, नन अफ दिस. यसको चाहिँ राइट एन्सर ऑप्शन ई, नन अफ दिस हो. त्यसै गरी डाइरेक्सन नम्बर 20. डाइरेक्सन नम्बर 20 मा दिएको छ. In each of the following question, 3 statements are given followed by 4 conclusion number 1, 2, 3 and 4. You have to take the given statement to be true even if they seem to be at variance with commonly known fact and then decide which of the given conclusion logically follow from the given statement, discrediting commonly known fact. 20 नंबर को स्टेटमेंट हाम्रो रीड करने. All doors are buses. All buses are leaves. No leaves is a flower. Conclusion number 1. No flower is a door. Conclusion number 2. No flower is a bus. Conclusion number 3. Some leaves are doors. Conclusion number 4. Some leaves are buses. अब चाहिँ ऑप्शन इसको यस प्रकार छ. नन फॉलोज. ऑप्शन बी, ओन्ली 1, 2 फॉलोज. ऑप्शन सी, ओन्ली 2 and 3 फॉलोज. ऑप्शन डी, ओन्ली 2, 3 and 4 फॉलोज. ऑप्शन ई, ऑल फॉलो. इसको राइट आंसर चाहिँ ऑप्शन ई, ऑल फॉलो. अब चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट टपिक क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिसबाट हो. क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिसको हाम्रो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइन्ड द ग्रेटेस्ट नम्बर दैट विल डिवाइड 43, 91 and 183 so as to leave the same remainder in each case.
अप्सन छ यसको ए 4, बी 7, सी 9, अप्सन डी 13। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर ए 4 हो। त्यसै गरी यहाँ एक्सप्लेनेसन मैले यहाँ राखिदिएको छु, अझै तपाईहरु एक्सप्लेनेसन पनि हेरेर यो सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अब 2 नम्बर क्वेशन हामी हेर्ने। विच अफ द फलोइङ फ्र्याक्सन इज द लार्जेस्ट? अप्सन छ ए 7/8, अप्सन बी 13/16, अप्सन सी 31/40 अथवा अप्सन डी 63/80। यसको चाहिँ राइट एन्सर अप्सन ए हो। यहाँ चाहिँ एक्सप्लेनेसन गरिएको छ, तपाईहरु यो एकचोटी हेर्नु होला। त्यसपछि क्वेशन नम्बर 3 .009 अब्लिक क्वेशन मार्क इक्वल टु 0.01। यसको अप्सनहरु छ 0.009, अप्सन बी 0.09, अप्सन सी 0.9 अथवा अप्सन डी 9। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन सी रहेको छ। एक्सप्लेनेसन यहाँ गरिएको छ। त्यसै गरी क्वेशन नम्बर 4 द लिस्ट पर्फेक्ट स्क्वायर विच इज डिभिजल बाई इच अफ 21, 36 एन्ड 66 इज? अप्सन छ ए 2,13,444, अप्सन बी 2,14,344, अप्सन सी 2,14,434 अथवा अप्सन डी 2,31,444। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन ए हो। यहाँ एक्सप्लेन गरिएको छ। त्यसै गरी क्वेशन नम्बर 5 हेर्ने हो। इफ x इक्वल टु 3 + 1/3 - 1 एन्ड y इक्वल टु 3 - 1/3 + 1 देन द भ्यालु अफ x² + y² इज? तपाईहरु सल्भ गर्नु होला। यसको अप्सनहरु चाहिँ अप्सन 10, अप्सन 13, अप्सन 14, अप्सन 15 छ। यसको चाहिँ करेक्ट अप्सन चाहिँ अप्सन सी हो। एक्सप्लेन गरिएको छ यहाँ। त्यसै गरी हाम्रो अर्को क्वेशन छ। इच अफ द क्वेशन गिवन बिलो कन्सिस्ट अफ अ क्वेशन फलोड बाई 3 स्टेटमेंट। यू हैव टू स्टडी द क्वेशन एंड द स्टेटमेंट एंड डिसाइड विच अफ द स्टेटमेंट इज आर नेसेसरी टू एन्सर द क्वेशन। अब यहाँ चाहिँ क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 6 व्हाट इज अरुण प्रेजेंट एज? अब यहाँ चाहिँ स्टेटमेंट दिएको छ। स्टेटमेंट नंबर 1 5 years ago Arun's age was double that of his son's age at that time. Statement number 2 present ages of Arun and his son are in the ratio of 11:6 respectively. Basically statement number 3 5 years hence the respective ratio of Arun's age and his son's age will become 12:7. ऑप्शन छ यसको ऑप्शन ए ओनली 1 and 2, ऑप्शन बी ओनली 2 and 3, ऑप्शन सी ओनली 1 and 3, ऑप्शन 4 एनी 2 of 3 अथवा ऑप्शन ई नन अफ दिस। यसको राइट एन्सर चाहिँ ऑप्शन डी हो। अब त्यस्तै गरी हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन हेर्ने हो। यसको एक्सप्लेनेसन यहाँ चाहिँ गरिएको छ। क्वेशन नम्बर 7 हेर्ने हो। क्वेशन नम्बर 7 मा इफ 20% अफ ए इक्वल टू बी then b% of 20 is the same as? ऑप्शन छ तपाईको ऑप्शन ए 4% of a, ऑप्शन बी 5% of a, ऑप्शन सी 20% of a अथवा ऑप्शन डी नन अफ दिस। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर ऑप्शन ए हो। यहाँ एक्सप्लेनेसन गरिएको छ। त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेशन क्वेशन नम्बर 8 इफ a इक्वल टू x% of y and b इक्वल टू y% of x then which of the following is true? ऑप्शन चाहिँ a is smaller than b, ऑप्शन b a is greater than b, ऑप्शन c relationship between a and b cannot be determined अथवा ऑप्शन d if x is smaller than y then a is greater than b अथवा ऑप्शन e none of these। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर ऑप्शन e हो। तपाईहरु एक्सप्लेनेसन हेर्नु होला। त्यसै गरी हाम्रो 9 नम्बर क्वेशन छ 3 pumps working 8 hours a day can empty a tank in 2 days. How many hours a day must 4 pump work to empty the tank in 1 day? ऑप्शन चाहिँ तपाईहरुको ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 12। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर ऑप्शन डी हो।
यहाँ चाहिँ तपाईहरुलाई एक्सप्लेनेसन गरिएको छ। त्यसैगरी 10 नम्बर क्वेशन छ, one pipe can fill a tank 3 times as fast as another pipe. If together the two pipes can fill the tank in 36 minutes, then the slower pipe alone will be able to fill the tank in option छ तपाईहरुको 81 मिनट, option B 108 मिनट, option C 144 मिनट, option D 192 मिनट। यसको करेक्ट आन्सर चाहिँ option C हो, एक्सप्लेनेसन गरिएको छ। त्यसैगरी 11 नम्बर क्वेशन, a motor boat whose speed in 15 km per hour in still water goes 30 km downstream and come back in a total of 4 hours 30 minutes. The speed of the stream in km per hour is option A 4, option B 5, option C 6, option D 10। यसको चाहिँ करेक्ट आन्सर ऑप्शन B हो, यहाँ चाहिँ एक्सप्लेन गरिएको छ। त्यसैगरी नेक्स्ट क्वेशन हाम्रो क्वेशन नम्बर 12, a man took loan from a bank at the rate of 12% per annum simple interest. After 3 years he had pay rupees 5,400 interest only for the period. The principal amount borrowed by him was option A 2,000, option B 10,000, option C 15,000, option D 20,000। यसको राइट आन्सर चाहिँ option C 15,000 हो, यहाँ एक्सप्लेन गरिएको छ। त्यसैगरी नेक्स्ट क्वेशन छ हाम्रो क्वेशन नम्बर 13, a man walked diagonally across a square lot. Approximately what was the percent saved by not walking along the edges? Option A 20, option B 24, option C 30, option D 33। यसको करेक्ट आन्सर चाहिँ option C 30 हो, यहाँ चाहिँ तपाईहरुलाई एक्सप्लेन गरिएको छ। त्यसैगरी नेक्स्ट क्वेशन हाम्रो क्वेशन नम्बर 14, by investing in 2/3% stock at 64, 1 earns rupees 1,500. The investment made is option A 5,640, option B 5,760, option C 7,500, option D 9,600। इसको करेक्ट आंसर ऑप्शन B हो। त्यसैगरी नेक्स्ट क्वेशन, a man buys a watch for rupees 100,950 in cash and sell it for rupees 2,200 at a credit of 1 year. If the rate of interest is 10% per annum, the man option A gains rupees 55, gains rupees 50, option B, option C losses rupees 30, option D gains rupees 30। यसको राइट आन्सर चाहिँ ऑप्शन B हो, यहाँ एक्सप्लेन गरेको छ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 16, डाइरेक्सन, फाइन्ड द ऑड मैन आउट। अब चाहिँ यहाँ चाहिँ 10 छ, 25 छ, 45 छ, 54 छ, 60 छ, 75 छ, 80 छ। अप्सन तपाईहरुको यहाँ A 10, B 45, C 54, D 75। यसको करेक्ट आन्सर चाहिँ अप्सन C हो, यहाँ चाहिँ एक्सप्लेन गरिएको छ। त्यसैगरी हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन डाइरेक्सन 17 to 19 क्वेशन नम्बर, फाइन्ड आउट द रङ नम्बर इन द गिवन सीक्वेंस of numbers। 17 नंबर क्वेश्चन हाम्रो छ 36, 54, 18, 27, 9, 18.5, 4.5। ऑप्शन चाहिँ A 4.5, ऑप्शन B 18.5, ऑप्शन C 54, ऑप्शन D 18। यसको करेक्ट आन्सर चाहिँ ऑप्शन B हो, यहाँ चाहिँ तपाईहरुको एक्सप्लेन छ। त्यसैगरी नेक्स्ट क्वेशन छ हाम्रो क्वेशन नम्बर 18, 582, 605, 588, 611, 634, 617, 600। यसको चाहिँ ऑप्शन A 634, ऑप्शन B 611, ऑप्शन C 605, ऑप्शन D 600। यसको चाहिँ करेक्ट आन्सर ऑप्शन A हो। त्यसैगरी हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 19, 56, 72, 90, 110, 132, 150। इसको ऑप्शन चाहिँ छ ऑप्शन A 72, ऑप्शन B 110, ऑप्शन B 132, ऑप्शन D 150। इसको चाहिँ करेक्ट आन्सर ऑप्शन D 150 हो, यहाँ चाहिँ एक्सप्लेनेसन छ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 20, 8, 24, 12, 36, 18, 54 अनि ब्ल्याङ्क छ ब्र्याकेटमा।
यसको चाहिँ अप्सन ए 27, अप्सन बी 108, अप्सन सी 68, अप्सन डी 72। यसको चाहिँ करेक्ट एन्सर अप्सन ए 27 हो। त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेसन यहाँ एक्सप्लेन गरेको छ। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को टपिक चाहिँ करेन्ट अफेयरबाट हो। करेन्ट अफेयरमा तपाईँहरूको रिसेन्ट इभेन्टबाट आउन सक्छ, नेसनल एन्ड इन्टरनेसनल न्युजबाट आउन सक्छ, रिसेन्ट ब्याङ्किङ न्युजबाट आउन सक्छ, अवार्ड रिलेटेड आउन सक्छ, इलेक्सन र पोलिटिकल न्युजबाट आउन सक्छ र नेसनल र इन्टरनेसनल गेमहरू जुन भएको छ त्योबाट हाम्रो क्वेसनहरू आउन सक्छ। अब सिटिजन ब्याङ्कमा सर्टलिस्ट भएका साथीहरूको लागि पोसिबल क्वेसनहरू यो सब्जेक्टिभमा आउन सक्छ। बाफिया 2073बाट क्वेसन आउन सक्छ। तपाईँहरूको रेमिट्यान्स अफेक्ट नेप्लिज इकोनोमी योबाट क्वेसन आउन सक्छ। एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज अफ रेमिट्यान्स आउन सक्छ। त्यसै गरी ब्याङ्किङ एन्ड कमान्ड एन्ड इङ्ग्लिसबाट आउन सक्छ। कमर्सियल ब्याङ्कको इस्युजहरू फङ्सनहरू योबाट आउन सक्छ। तपाईँको मेमो र इमेल अथवा लेटर राइटिङ लेख्नको लागि आउन सक्छ। फङ्सन अफ सेन्ट्रल ब्याङ्क यसबाट आउन सक्छ अथवा फङ्सन अफ कमर्सियल ब्याङ्कबाट आउन सक्छ। तपाईँहरूको प्र्याक्टिसको लागि मैले यो चाहिँ मोडल सेट बनाएको हो। कृपया मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र लाइक गर्नुहोला, बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कुनै पनि क्वेसन छ मलाई कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।